سی وی آپ کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جب آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی پوزیشنز کے لیے دروازے کھول سکتی ہے. جی ہاں بالکل. میرا نام ہے محسن طارق اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک پیج کے اوپر اور پروفائل کے اوپر. ایک اچھی سی وی کس طرح لکھی جاتی ہے, اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہوتے ہیں, کون کون سی چیزیں ہم نے اس کے اندر انکلوڈ کرنی ہوتی ہیں, کون سی چیزیں اگر ہم انکلوڈ کریں گے تو اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ بھی جا سکتا ہے. یہ سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے ریکویسٹ کی تھی ڈاکٹر سحر عباس کو, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جرمنی سے. میں ان کو آج کے سیشن میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, میں ٹھیک. جی آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. ویلکم. الحمدللہ میں بھی ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا ہمارے لیے. اور کافی سارے لوگ کوشچنز پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے خاص طور پہ کہ سی وی کے اندر ہم جو ہیں کون کون سی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یا کمپوننٹس ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں سی وی کے, جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب بھی ہم اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو ان سارے سوالات کو جو ہے میں آہستہ آہستہ آپ سے پوچھتا جاؤں گا. تو آپ اگر تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں تاکہ لوگ آپ کو جان سکیں. آڈینس بھی گیدر ہو رہی ہے اور جو آڈینس آ چکی ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا تو وہ جو ہے کامنٹ سیکشن میں اگر بتا دیں کہ آپ کو ہماری آواز ٹھیک آ رہی ہے, آپ ہمیں صحیح طریقے سے سن پا رہے ہیں کہ نہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. میں اس ٹائم کو استعمال کر کے اپنا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. جی میں پاکستان سے ہوں. میں نے اپنا بیچلرز اور ماسٹرز پاکستان سے کمپلیٹ کیا اینڈ دین آئی موو ٹو, میں جرمنی میں موو ہو گئی ود اے اسکالرشپ جس کو کہتے ہیں DAD یا ڈارٹ اسکالرشپ, بہت فیمس ہے ہمارے ملک میں. So from my education I'm a scientist, I'm a neuroscientist. میں نے اپنی PhD نیورو سائنس میں کمپلیٹ کی ہے جرمنی سے, اور اس کے بعد میں نے اپنی پوسٹ ڈاک کمپلیٹ کی. میں نے ایک ہاسپٹل میں کام کیا اینڈ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے پروفیسر نہیں بننا. آئی مووڈ مائی کریئر فرام ایکیڈیمیا, مطلب یونیورسٹی سے انڈسٹری میں نے اپنا کریئر شفٹ کیا. سو اب میں فارماسوٹیکل کمپنی کے ساتھ منسلک ہوں اور ایز اے مینیجر فارماسوٹیکل کمپنی میں پروڈکٹس کو R&D سے پروڈکشن پلانٹس تک لے کر آنے کا کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. اور اپنے فری اوقات میں میں بچوں کو گائیڈ کرتی ہوں, فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہوں اور فری ویبینارز آفر کرتی ہوں ایوری سنڈے وائا لنکڈ ان اینڈ وائا مائی ویب سائٹ. جی بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی ویب سائٹ جو ہے پن کر دیتا ہوں کامنٹ سیکشن میں بھی, تاکہ جتنے بھی ہماری آڈینس آ رہی ہے وہ آپ کو اپروچ کر سکیں. اور جو فری ویبینار جو ہیں آپ ارینج کرتی ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ سارے جو ہیں ان کے ویبینارز کو جوائن کریں. اور ٹپیکلی جو ہے یہ بڑی اچھی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں جرمنی کے حوالے سے ریگولرلی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گا کہ سی وی کیوں ایک اچھی سی وی ضروری ہوتی ہے کسی بھی اسکالرشپ کے لیے یا جاب کے لیے؟ بہت بہترین سوال ہے یہ. سی وی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ سی وی کی ہسٹری کیا ہے, یہ کیسے وجود میں آئی, لیکن سی وی کا مقصد آج کل ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سی وی جو ہے از لائک یور ایمبیسڈر. جب آپ کہیں پہ نہیں گئے لیکن آپ نے ایک پیغام بھجوایا ہے اپنا, دس از یور مارکیٹنگ ٹول. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹی وی خریدنے جاتے ہیں تو ان کا ایک بروشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ٹی وی پہ کسی ٹوتھ پیسٹ کی کمرشل دیکھتے ہیں تو وہ اس کا بروشر ہوتا ہے, وہ اس کا ورچوئل یا پھر ایک ویڈیو فارم آف سی وی ہے, دیٹس آلسو کالڈ سی وی. سو سی وی جو ہے وہ آپ کا ایمبیسڈر ہے, آپ کا ایک مارکیٹنگ ٹول ہے جو آپ کی سکلز ہیں ان کو سیل کرنے میں ہیلپ کرے گا. اگر آپ کی مارکیٹنگ جو پچ ہے وہ کلیئر ہوگی تو آپ اپنی سکلز کو بہتر پرائس پہ سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کی مارکیٹنگ پچ کلیئر نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی ایک اچھی جاب ڈھونڈنا اور اس کو اچھی سیلری پہ نیگوشیٹ کرنا. جی بہت شکریہ آپ کا, بڑی یوزفل انفارمیشن تھی. یہ بتائیے گا کہ کمپوننٹس آف سی وی کیا ہونے چاہیے, کون کون سی چیزیں ہمیں سی وی کے اندر انکلوڈ کرنی چاہیے؟ سو اب ہم واپس پہلے سوال پہ جاتے ہیں کہ سی وی کا مقصد کیا ہے. اب ہمیں اس مقصد سمجھ میں آ گیا کیا ہے تو اب ہم نے وہ ویلیو اپنی سی وی کے تھرو ڈلیور کرنی ہے. مارکیٹنگ پچ,
मार्केटिंग पिच कहाँ से आएगी? जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी एजुकेशन है। अब मार्केटिंग पिच को बेहतर तौर पे लिखने के लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का पढ़ना ज़रूरी है। सो सीवी को इस तरह से देखें कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक क्वेश्चन है और सीवी उसका आंसर है, ठीक है? इन दोनों को ऐसे अलाइन होना चाहिए। अब कंपोनेंट्स पे आते हैं, तो कौन सी चीज़ें आपका ये मकसद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी जो जस्टिफाई करेगी कि क्या आप एक्स जॉब, कोई भी जॉब है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपकी सीवी जो है वो हाउ सॉरी एक्स जॉब जो है उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी सीवी से बेहतर और कोई सीवी नहीं है। ये आपकी सीवी का मकसद है ऑन अ अपर लेवल। अब इसको हासिल कैसे किया जाएगा? इसको हासिल करने के लिए आप अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। दीज आर लाइक स्टैंडर्ड बेसिक, यू नो, हर एक बच्चा अपनी सीवी में ये चीजें ऐड करता है, दिस इज वेरी नॉर्मल। लेकिन क्या चीज है जो आपको स्टैंड आउट करती है? यू नो 10 टीवी हैं यहाँ पे, आप उनमें से सोनी का ही क्यों खरीदेंगे या एलजी का ही क्यों खरीदेंगे या आप एप्पल का फोन ही क्यों खरीद रहे हैं? यू नो, और भी बहुत सारे हैं मार्केट में। सो आपको स्टैंड आउट करना है। आपको स्टैंड आउट करने के लिए जिन बच्चों ने खाली अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, अपनी स्किल्स लिखी हैं, आप उसको एक लेवल अबव जाके लिखेंगे। अब मैं उसके लिए एक सिंपल टिप दे देती हूँ। देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड गूगल्स XYZ फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के तहत आप अपने एक्सपीरियंसेस को इस तरह से पिच की फॉर्म में ऑफर कर सकते हैं कि ये आपका एक्सपीरियंस था और इसका ये इम्पैक्ट था। सो skills, definitely, experiences, but how you need to push them above. And one more thing, which is जो हमारे बच्चे जो हैं उनको नहीं पता, और वो है आपकी सीवी का टाइटल। बहुत सारे बच्चे, मैं खुद भी ये मिस्टेक करती रही हूँ, हम लोग क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं एंड दैट्स इट। आपने मार्केट में देखा होगा कि हर किसी की कोई एक चीज है, कोई एक सेंटेंस है, यू नो, किसी भी चीज की कमर्शियल को उठा के देखें, हर किसी की एक स्पेसिफिसिटी है। किसी भी टीवी की, दिस मेक्स योर लाइफ बेटर, यू एंजॉय मोर टाइम विद योर फैमिली, एनीथिंग, दिस इज अ सेलिंग पिच। जब कोई आपकी सीवी खोलता है, फर्स्ट थिंग दे सी इज द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। सो यहाँ पे हाउ कैन यू अट्रैक्ट द पर्सन सो दैट ये पर्सन आगे पढ़े? यहाँ पे इम्प्रेशन डालने के लिए आप अपनी सीवी में एक टाइटल ऐड कर सकते हैं। टाइटल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास डॉक्टर टाइटल है, तो मैं अपना डॉक्टर टाइटल डालूंगी। जिनके पास डॉक्टर टाइटल नहीं है, तो वो अपने नाम के सामने जो भी आपने एजुकेशन ली है, बायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूटिलाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी आपकी एक कोर स्किल है, जो स्किल उस जॉब को करने के लिए रिक्वायर्ड है, टेक दिस अप एंड पुट दिस इन फ्रंट ऑफ योर नेम। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम है, यहाँ पे एक बच्चे ने मैसेज किया है, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अल्ताफ। सो मोहम्मद अल्ताफ software developer, Mohammed Altaf, back-end software developer, front-end software developer, you know, biotechnologist, microbiologist, or diploma, or MBA, anything, जो भी आपकी core है, please put this on the top. So now I will sum this up in answer into title, with title CV, your skills, your experiences, your education, but experiences not just mentioned like um, I worked in a hospital, you know, or I was a teacher, or I was a researcher, or I just the title of your previous job, project manager at this X institute. This does not give recruiter any information about you. You need to tell more.
सही। एक चीज़ क्वेश्चन भी साथ-साथ हम लेते चलेंगे क्योंकि बाद में बड़ा बैकलॉग आ जाएगा क्वेश्चंस का। मोहम्मद अल्ताफ ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जॉब सीवी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक? Very interesting question, Mohammad Altaf. Yes, there are differences. Even बच्चे जो रिमोट जॉब ले रहे हैं उनकी सीवी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है जो ऑन साइट अप्लाई कर रहे हैं सो कौन से ये डिफरेंसेस हैं जिन्हें आपने नज़रअंदाज नहीं करना फॉर एग्जांपल पहले देखते हैं हम एकेडमिक सीवी में आप देखें कि एकेडेमिया का जो इन्वायरमेंट है जो रिसर्च में आप जा रहे हैं वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है किस चीज़ को वो वैल्यू करते हैं कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं फंडिंग एनीथिंग रिलेटेड टू फंडिंग आपने मिस नहीं करनी अपनी सीवी में इनफैक्ट अगर आपने ट्राई भी किया अप्लाई भी किया आपको नहीं भी मिली आई वुड स्टिल एडवाइज पुट इट देयर बिकॉज यू शोड इंटरेस्ट you showed passion you put the hard work in even whatever result was it doesn't have to be perfect so put it there anything and everything about funding anything and everything about collaborations because research is not like a one person job I cannot do मैंने अपनी phd की I won't say that everything I did it's all because of me no somebody before me they established a protocol somebody before me they studied some part of the subject and then I took over it's just like a continuous process okay anything and everything about collaboration that you can initiate with your neighboring group, with other universities, with other hospitals, with other companies, anything that brings home something. Bring home means in that group, in that lab. Put it there. Anything and everything about literature. If you have published any publications, if you have published any conference paper, any abstract, anything you presented anywhere, so you put it there. So then the sections will be different. For academia, okay, you put your title, you put your experience, you put your skills, your education, your collaborations, your funding. When I will put my collaboration, I will divide them into two parts, national and international. Maybe you have it, maybe you don't. And then, of course, I will put a list of all my workshops, conferences, but the only which makes sense, which matters. Not like if I have 10, I would put 10 there. No, it means I am wasting other person's time and that person is not able to read the information that the person should be reading otherwise. And now coming back to the job. For the job people, if your job is into an R&D, for example, in research, then please leave this information. If your job is completely about project management, is completely about outside of research, has nothing to do with it. So then what you will do, then don't think that the skill that you learned before, they cannot be used here. They can definitely be used here, but you just need to learn how to put them there, how to make the pitch now for that job. So what you will require now, so now put your title, put your experiences, put your skills, put your education. But the main focus that the 80% of my time when I'm writing that CV, I will spend on how can I answer that job description in my CV. This is the most important part. Summary. Many of you, this is what I wanted to speak separately, that this idea of having a summary in your CV, it's like a mystery, and many of us don't know what to put there. In today's world, there is no need of summary, but I still put it there. It's because this helps me. But if you put it just like, I am an self-motivated and aspiring candidate looking for, opportunities to thrive my career. If this is how your summary looks like, then it's better if you delete that one. So don't put your summary like this unless it's going to help you. So there are attraction point in your CV. First attraction point is your title. Second attraction point is your summary. If they are gonna back off from your summary,
leave it out. But if you can turn it into your sales pitch, leave it there. That's what I do. I use a summary as my sales pitch. What I do instead, I position myself as a specialist. I will not say that I am somebody looking for something. Yes, I am looking. I don't need to tell them. It's same like somebody wants to sell an iPhone and say, hey, this is the phone and we are looking to sell this phone. Who will buy this phone then? No. This sales pitch should be like, I am this person with this background, whatever your experience you have, you are coming from university, think of what you did in university, and then think of the impact that you have made. So just in 3 sentences, who you are, what experience you made, what impact you can help other person achieve their goal. If you can nail this thing, then that person is going to think like, oh, this person is useful. I need to read more in detail. And bam, there you catch them in that experiences section. And this is where they decide if they're going to give you the interview call or not. ओके, थैंक यू। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी, और आहिस्ता आहिस्ता आगे क्वेश्चंस को भी साथ साथ लेके चलते हैं। एक पूछ रहे हैं उस्मान, इन केस ऑफ जॉब हंटिंग डिड वी यूज रेज्यूमे और सीवी? I think I would use CV. In case of job hunting, I would use CV, definitely. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर, सीवी पिक्चर बैकग्राउंड ब्लर और वाइट, विच वन इज बेस्ट? तो अगर आप इसके बारे में बताएं कि पिक्चर होनी चाहिए, पिक्चर नहीं की होनी चाहिए। जरूरत नहीं है। पिक्चर की जरूरत नहीं है। मेरी सीवी में पिक्चर नहीं है, और मैं यही बच्चों से कहती हूँ, आपको पिक्चर की जरूरत नहीं है। अगर आपने डालनी है तो remove any kind of background. If it's white, blue, black, it's okay. Unless you took your selfie, there is a background behind, there is a tree behind or anything, then remove it. So in today's world, there is no need of picture. Nobody wants to see pictures. What they want to see is, are you able to do this job or not? If your CV is able to answer this question, this should be your goal, not picture. But if you are really worried about that, hear me out with these 2 things. First, sometimes we are sending applications via email, right? So there is an option for your email ID. You have a profile picture in your email. So put your picture there, not in CV. Second, when you fill the formulas online, they also ask to upload your picture. Upload your picture there, not in your CV. ओके, एक और सवाल पूछना चाह रहा था, मैं खुद भी पूछना चाह रहा था। कुछ लोग जो हम सर्टिफिकेशंस लेते हैं, सारे लोग कह रहे होते हैं आपने जो कोर्सेज करने हैं, सर्टिफिकेशंस लेनी है, तो हम जो है कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस जो हैं हम अपनी सीवी के अंदर ऐड करें? ये भी एक काफ़ी जो है पूछे जाने वाला सवाल होता है। It's a very interesting question. I'm glad that you asked. Especially in terms of Germany, I help people for Germany, for German job market. That's my specialty. So if you want to think of Germany, then please think of certificates. Certificates are like a huge business here. There are so many coaches and academies, they provide certificates. Even if you go in a doctor's hospital, they have, जैसे हमारे पाकिस्तान में हम किसी की तस्वीर बड़ी करवा के तो दीवार पे लगाते हैं ना, the same way they put their certificate in a frame and they put it on the wall. This is their tradition. So you need to understand how much important this is. Get your certificate. But for example, अगर मैंने अभी academia को छोड़ दिया और मैं industry में चली गई, everyone have their own situation. So you need to understand what is the requirement of industry. मैं pharmaceutical industry में जाना चाहती थी, and there is a requirement that फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जीएमपी इन्वायरमेंट है। जीएमपी इन्वायरमेंट का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है ये वर्ल्ड वाइड है, but this is coming from FDA, from regulatory authorities in for pharmaceutical companies. Okay,
तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? There are so many academies where I can go and enroll myself for this GMP certificate. अगर मैं पहले ही ये सर्टिफिकेट हासिल कर लूँ और मैं फिर अप्लाई करूँ तो मेरे चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। सो एग्जैक्टली द सेम वे हर किसी को अपनी सिचुएशन देखनी है कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ जाना है। यहाँ से यहाँ में क्या फ़र्क है? यहाँ वाले लोगों के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके वो सर्टिफिकेट हासिल करें और उनको अपनी सीवी में डाल दें। नाउ वन लास्ट टिप, if you are making your CV um, as a one document, that's totally fine. Put the name of the certificates, where did you get that, it's okay, but don't take so much space for that. But if you are sending your application, then I would advise you to attach that certificate at the end of your CV, like as a PDF file or something like that. If you have like 10 certificates, then think of what's important, not that कि आपने किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था तो वो भी आप डाल दो। No, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के इन सारी चीजों को देखे. So you really need to provide only the thing which matters for your application. ओके। एक क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के हवाले से मैं खुद भी पूछना चाहूँगा कि सीवी के अंदर फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं, जिस तरह आपने बताया समरी लिख दी, उसके बाद हम अ, अपने वर्क एक्सपीरियंस को पहले लिखें, फिर हम एजुकेशन पे जाएँ, फिर हम अपने जो स्किल्स हैं हमारे, कुछ लोग उसमें भी सेग्रीगेशन करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारे ऑनलाइन स्किल्स ज़्यादा होने चाहिए या टेक्निकल स्किल ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटेशनल या प्रोग्रामिंग स्किल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो हम इस इशू को किस तरह टैकल करें, फॉर्मेटिंग के इशू को? Formatting में I tell you, I have seen, I don't know, more than 300-400 CVs in this year and last year. So माशाल्लाह हमारे बच्चे फॉर्मेटिंग में बहुत होशियार हैं, बहुत किस्म के डिजाइन्स एंड कलर्स एंड फिगर्स एंड टेबल्स, बहुत बहुत कुछ इन्हें बनाना आता है. It's good, but don't do it. This is the message. Don't do it. Don't do it in your CV. Leave this if you are a graphic designer or something, you want to show it, then show it in a way, but please don't do it in your CV. Your CV should be as boring as possible. So how you really segment your CV? I can give you a free template. It's on my website. If आई you कैन पिंग यू। have Yes, if you have my website link, you just go there and click on the material section. There you can find a free template from me that I use for my CV. So let's now break down the segments. So the first upper part of your CV should be like your name and then your title. But like it should cover like the whole upper first sentence. And then I would add my email address, my LinkedIn, and my address. If I am in Germany and I need to apply within Germany, then I would add my address. Otherwise, I will not add my address. Otherwise, if you are applying for a remote job, don't put your address, put your time zone. This is the difference here. Then I will write only 3-sentence summary. And the summary is like, just like I explained it to you already. And then I would give the whole space to my previous experiences. And what counts in your previous experiences? Anything, any job that you did, any internship that you did, in your studies, any kind of workshops you did, any kind of projects you did together, assignments you did together, group assignments, presentations, anything that was on top of your, lectures and exam. This is your experience, anything you participated in. But you need to learn the art, how to turn this into an impact with showing, how to turn it into an experience with showing some impact. So I will just give you one example, so you understand what I'm talking about with this impact thing. For example, I want to apply to a new job, right? And I work in a pharmaceutical company. Now think of this from your perspective, from your industry, that I want to apply in a pharmaceutical company. And what's important for pharmaceutical companies? Everyone wants to make, of course, more money and cut the budget.
and having the same quality of the product and achieving the timelines. So these are like the biggest goals of like more or less every company. So what I would do if I did a project in the past where, for example, I'm coming from a scientific background and I exchanged one material to another material. This was just like a normal project for me. But then how will I turn this experience into a um, sales pitch or into an experience with an impact? So I would say it like that. um, Designed, um, completed, or supervised a project where X thing was replaced with Y, leading us to have X amount of cost reduction or X amount of profit per year. 90% of you do do this. I exchange this material to this material at this company for any project. This doesn't this says that okay, you were involved in this project, but you missed the part where you could sell yourself. So when another hiring manager can see that if this person can save or make somebody this amount of money, maybe I have, this project, maybe I should try this. Maybe she can bring her experience on. So this is like the whole idea of you writing your experiences. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन केस ऑफ जॉब और स्कॉलरशिप हंटिंग वी नीड टू अप्लाई ऑन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. इन दैट केस व्हाट शुड बी मोस्ट प्रोबेबल टिप सो दैट वी कैन प्रिपेयर वन गुड सीवी और रेज्यूमे दैट विल बी यूज्ड इफेक्टिवली एवरीवेयर. तो मैं इस क्वेश्चन से ये समझाऊं कि ये चाहते हैं कि हम एक ही सीवी या रेज्यूमे बना दें जो हम जिसको हम बार बार उसको हम अप्लाई करते रहें उसी के ऊपर. तो क्या ऐसा करना चाहिए? मतलब एक ही सीवी को हम, मेरा नहीं ख्याल कि यूज करें हर जगह पे. सो सीवी जो है उसका बनाने का तरीका क्या है? फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ब्रेन डंप. अगर मैं आज अपनी सीवी बनाऊंगी फ्रॉम जीरो, सीवी बनती है बेसिकली एवरी मंथ, एवरी ईयर. आप हर मंथ जो अचीवमेंट्स ले रहे हैं, हर ईयर. This is what basically I did. At the end of every year, I sit down and thought, okay, I went to this conference, I helped this person, I did this, that, XYZ. And then I put them in my document, which I call brain dump. So sit down and think about 1 year, 2020. Just अपने दिमाग में उस पूरे ईयर को लेकर जाएं वन बाय वन और सोचें कि आपकी अचीवमेंट्स क्या थी. आपने उसमें किसी को हेल्प की, आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया, आपने पार्टिसिपेट किया, कुछ फिनिश किया, और जो फिनिश किया उसका इम्पैक्ट क्या था. उसने किसी को हेल्प किया आगे, या आपने अपनी लैब में कोई प्रोटोकॉल सेट किया. एनीथिंग, थिंक अबाउट इट. दिस इज द स्टेप वन, ब्रेन डंप. This is your CV that I would say that you can tell, I can use it everywhere. No, that would be second one. Second step. From the brain dump, now you bring, for example, the template that you will download from my website, that you will throw all of these things into that one CV. All of your experiences from all the years. It does not matter they match to this job or they don't match. This CV is for you. This is your one CV that you can use anywhere. Now comes the application. If you are going to apply for this X position, look at the job description. What are they looking for? And then go and look into your CV. What are the things which match that most? If not directly, then how can you, push the words to match it? Then pick those things and have this final and then send it. It only takes, every time when you want to have a CV for any position, instead of sending this second number application, a CV, spend 5 minutes more. 5 minutes more and then send this third version. It only takes 5 minutes, but then this can bring back to you the interviews instead of sending maybe 300 applications. Yes. Next question पे चलेंगे. If you have taken a number of trainings about different fields like teaching, computer, Pedagogy. pedagogy,
subject relevant, etc., then can we add all these certificates for PhD admission in biology related field? Okay, so biology is such a big subject, you know. जब आप बायोलॉजी में पीएचडी करने जा रहे हैं तो आप किस ग्रुप में जा रहे हैं, आपके ग्रुप का फोकस क्या है, वो बायोकेमिस्ट्री है. इट्स स्टिल सच अ बिग ग्रुप, यू नो. बायोकेमिस्ट्री, आप पूरे जिस्म का कोई एक हिस्सा उठा लें और आप उसमें बायोकेमिस्ट्री ढूंढ सकते हैं, आप उसमें माइक्रोबायोलॉजी ढूंढ सकते हैं, जेनेटिक्स ढूंढ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप न्यूरो साइंस का था, but दिमाग is such a big thing, you know. And मेरा subject जो था eyes था. Eyes is the outer part of the brain. So I look at the focus of that. I had no experience at all, but still I looked what kind of for example, what kind of projects they are having. How can you find this? Read their previous 5 publications. This is the thing. Read their website information where they talk about their bigger idea of what they want to achieve. Second, what kind of methods they are using. For example, they are using pure biochemistry method. They are working with proteins. They are working with only computational methods. They have some, for example, biophysical methods, for example, this HPLC, stuff like that. So it's such a huge variety of things in one subject. Have this second version of your CV, put everything there, and in the third one, see what's important for them. For example, if you are going into a PhD where the 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 idea of their group is psychology, teaching, behavioral studies, something like that, then go for this pedagogy, you know, Okay. and go for this behavioral thing. But don't Oh, go for the sports thing. If they yes. would ask you as a question about yourself or your hobbies, don't put your hobbies on the CV. Yeah, this is also I wanted to say. हाँ, यही चीज मैं पूछना भी चाह रहा था. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज लोगों ने लिखी होती हैं, वो क्या लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, अगर कहाँ पे लिखनी चाहिए, अगर? This is a very good question. To be honest, I don't do that anymore. Um, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैचलर्स में हैं, मास्टर्स में हैं या पीएचडी की एप्लीकेशन बना रहे हैं, it's okay, you can do that, there is no harm about it, but really at the end of your CV, but not like you take half of the page for this one, only maybe 3 sentences, 3 bullet points, and then you say, or maybe one sentence, I like doing hiking, cooking, I don't know, going for walks or playing with dogs, I don't know, whatever you like, just in this one sentence to show your human self. This is the purpose behind it. But if you are now going more and more above, then you can, because then you need to show way more experience. Then take the space for those things. And then you can leave these things, but then bring your personality, this part of you in interviews. When they ask you about, hey, how are you? Tell me about yourself. Don't say, hey, I am good. Thank you. No, then bring these things, not that you start telling, hey, I'm good, I like cooking. No, hey, I'm good, actually I just had a great hike last weekend, the weather was nice. Yeah, how are you doing? This is just a way of um, turning an interview into a conversation. जबरदस्त. बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने दे दी मेरे ख्याल से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैक्सिमम पेजेस ऑफ सीवी? अगर आप मास्टर्स बैचलर्स में जा रहे हैं, 1 page CV is fine. But 1 page CV does not mean कि आपने इतने बड़े-बड़े fonts में लिखा हुआ है, इतने बड़े-बड़े boxes, डब्बे बनाए हुए हैं उधर. No, then your CV should really look compact and boring. When I say boring, that means, no red, green, blue colors. Second thing, अगर आपके पास, for example, you said for PhD publications हैं या नहीं है, या आपने participate किया किसी research में, for example, तो आप उसको 2 pages पे लेकर जाएं. बिकॉज अगर आप एक पीएचडी की एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं और आप उसे खाली ये लिख रहे हैं कि आई डिड माय मास्टर्स ऑन दिस लिपिड एनालिसिस
in University of, I don't know, Lahore or Punjab, I don't know which university. If you are doing this, you are not helping yourself. Instead of that, turn this into 3, 4 sentences and then talk about your project, talk about what you did there, so that that person understand. Talk about the tools that you used. For example, you used PCR machine, I don't know, gel analysis. I don't know, I'm talking a lot from biology perspective because that's where my background is, but the same can be gone for engineering, for IT people, for behavioral scientists, for, I don't know, everyone. सही। अच्छा, ये एक चीज़ आप जो स्किल्स के बारे में बता रही थी, कुछ लोग एक और चीज़ भी कर रहे होते हैं ना कि वो अपने ऑनलाइन स्किल्स में गूगल ड्राइव का लिख लेते हैं, आई कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो क्या ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ें होती जा रही हैं, हर किसी को आनी चाहिए। Yeah, this is the thing. जब 10 बच्चों ने गूगल माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, तो उसमें से आपने भी गूगल माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, तो आपने स्टैंड आउट तो नहीं किया ना। मतलब अम, 10 एक किस्म के मोबाइल फोन्स हैं, तो why would someone buy you? Think of yourself as a phone. आप भी वही फीचर्स ऑफर कर रहे हैं जो कोई दूसरा ऑफर कर रहा है, तो फिर आपको क्यों पिक करे कोई? सो जस्ट it's not personal. Jobs and interviews is not about you. It's about that job advertisement. It's about that position. हम इसको बहुत इमोशनल कर लेते हैं, oh my god मुझे रिजेक्शन हो गई. No, they didn't reject you. They reject the application that you sent. These are two very different things. So अब आप इसको कैसे scale up करेंगे these skills में? I don't do that. Maybe I was used to do this, but I learned these things now. अगर मुझे डालना है, Microsoft, then I will just say Microsoft package. But that's not it. ये मैं उस वक्त डालूंगी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ अपनी सीवी की और थोड़ी सी जगह बची हुई है, और वो अजीब लग रही है खाली, तो मैं उसको इससे फिल करूंगी. But this will not be my first thing in my CV. My first thing is always, like when I talk about skills, I always divide them into 2 parts. 2 हिस्सों में इसलिए किया जाना चाहिए. First, for the role. Second, your skills. For the role, वो रोल जो है उसके लिए क्या जरूरी क्या है, क्या चाहिए उसको. आपके पास तो माइक्रोसॉफ्ट है, बट उसको क्या चाहिए वो जॉब कंप्लीट करने के लिए? मे बी उनको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, मे बी उनको एक्सेल चाहिए, आई डोंट नो, और मे बी सिग्मा प्लॉट चाहिए. एनीथिंग, think about that first, about those technical skills for the role, and then about you. And then I always put about for me. In today's world, having only technical skill is not enough, because we we have grown as a human species so much that we learned it requires to bring your human self on the working place. We are not robots. So why I add this sentence? To bring my personality into this application so that they see I am more than these skills. And what is that? For example, I am good at communication. What does that mean? Communication, it does not mean कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप मुझसे बातें कर रहे हैं. No, communication means कि जब आपके ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो you will be able to handle that. Not कि हम एक दूसरे से दंगा फसाद एंड लड़ाइयाँ शुरू कर दें. That's not optimal. Another thing, emotional intelligence, that I bring emotional intelligence on the table. अब फर्क आया. अब एक मोबाइल वाला जो है वो खाली माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट भी है और उसके ऊपर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का फीचर भी मिलेगा. तो आप लोग डेफिनेटली यू विल बी इंट्रीग्ड कि हम लोग जो है इसको चेकआउट करते हैं. आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो दिस इज जस्ट द वे ऑफ सेलिंग योर सेल्फ. अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े, उसमें साफ लिखा होता है कि what they are looking for. For example, working in teams is just like a very simple thing, but it's not that simple thing. It's like dealing with different age group people, different gender people.
it just brings more diversity. So these are kind of the skills that I bring extra more than my technical skills to add my personality and more convincing element into the CV. ओके, हम मूव ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बड़ा डिटेल आंसर दिया आपने इस बात का। रेफरेंस पोर्शन शुड बी अ पार्ट ऑफ एकेडमिक सीवी, जो हम रेफरेंसेस एंड पे लिखते हैं। कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं कैन बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट। Please don't do that. This is exactly मैं यही बोलने वाली थी कि reference will be provided on demand. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बच्चों को इंग्लिश का एक्सप्रेशन जो है वो उसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग बहुत बार इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं जिनका मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ और फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। आई एम विलिंग, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आई एम विलिंग टू मूव टू जर्मनी फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब नाउ दूसरी एग्जांपल। I am excited to explore the German culture when I have the possibility of this scholarship. What is the meaning going from these two sentences? When you say I'm willing, it's like किसी ने आपके सर पे, तलवार रखी है कि जाना है, and then you say, okay, I will go. But then when you show your passion, you show your interest, but not just by saying I am motivated and I'm excited, but for what? Tell it for what? And this makes a difference between you and the other person who will get the job. Okay, now the references section. Yes, this is not the fault of our student, but this is the fault of our student. हम देखा देखी उसने ऐसे किया, उसने ऐसे लिखा, मैंने भी ऐसे लिख दिया. But every time when you do this, think about it. Think about it कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? Is it helping me or not? So now I will give you the answer in two parts. First, please remove this. If you don't have a recommendation letter, just don't say this at all. If they need it, they will still send you an email. Okay, now for those जो बच्चे जर्मनी में आना चाहते हैं या यूरोप या इस तरफ उनका फोकस है, तो आपको मैं बता दूं, it's mandatory in law for Germany, people who are interested into Germany, to have a recommendation letter, to have a reference letter. So instead of writing that, what I would do, I would get myself a very good recommendation letter. So what is a very good recommendation letter? It's not like, sir, आप मुझे एक recommendation letter लिख दें. Okay, ठीक है, मुझे template बना के भेज दो, मैं sign कर दूंगा. No, don't do that. Because the way other person is going to express their interest in you, you cannot express that same interest within you because you are biased. You want all good things about you. This can backfire. What you can do instead, you can make a bullet points of the things that when you work with that person, you write those things. That for example, आपने एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, आपने उसको सीखा, आपने उस पर प्रोजेक्ट चलाया, आपने डेटा एनालिसिस किया, आपने उसकी रिपोर्ट बना के दी, and then you also write the, I don't know, thesis or something, writing. So what it takes, like experiment, analysis, writing, these are all the skills which that person should be talking in your recommendation. So send this to that person instead of draft. So then that person should write the recommendation. You don't need 5, 6. You need only one, but good one. And then attach that at the end of your CV. जब आपकी CV एक पेज है या 2 पेज है, उसके बाद आप उसको जो आपका recommendation letter है उसको PDF में लेकर जाएं and then इन दोनों को merge कर दें. So your CV is like CV and then जब आपकी CV खत्म हो गई, it's a recommendation letter. This is what a normal CV looks like in my eyes. ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेशन को कंक्लूड करने जाएंगे। व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स इन अ सीवी? Very good question again. So there can be many biggest mistake. So the
First mistake is students don't read the job description at all. They don't know what they are applying for, even though it's there. Sometimes they even forget to save it, और उनको interview call आती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि what this job is about. So first, read the job description. Read the job description and then find the keywords. This is just like one thing, the same keywords that they have used in the job description, you can pick up and put them in when you are writing about your job experiences. Okay. First point was to read the job description and give the answer in the job description. Second point, not using action words. It's like you are basically hurting your CV when you are not doing that. So, for example, I will give you 2 examples, and then you can decide which one you will buy. First example is I worked on a data analysis with Professor Dr. Attar in Islamabad. The second one is designed, experimented, and completed a project of data analysis, which helped us understand better user experience for anything. So the second sentence, you did not start with I. You started with an action word, which was designed, experimented, completed. I also have a list of action words. You can also get that from me. That you, every time you think of writing one experience, you start with an action word. So this is another mistake that people are doing. And then third, of course, that they are using they are talking about their job experiences as their previous job titles. For example, what are your job experiences? Assistant professor in biology at X, lecturer at Y, I don't know, student council head at this one. This does not give me any information or recruiter any information. So don't do that. And then forgetting about putting your skills, your personality related skills on the table. This is another thing. And of course, then not attaching your recommendation letter. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द आंसर्स। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो इसके बाद भी आए हुए हैं, और आई थिंक हमने वो इस सेशन के किसी न किसी पोर्शन में आंसर कर चुके हैं हम। तो फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैंने ऑलरेडी डॉक्टर सहर की वेबसाइट का लिंक और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन किया है। इनसे कनेक्ट करें लिंक्डइन के ऊपर, और इनके जो फ्री वेबिनार्स हैं उनको भी लाजमी ज्वाइन करने की कोशिश करें, तो आपके डिटेल्ड आंसर आपको मिलते रहेंगे वक्त के साथ साथ। आज के सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। मैं डॉक्टर सहर से कहूँगा कि कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो छोटी सी एक वर्डिंग में हो वो बताएं, फिर उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं। All right, thank you so much. Okay, I appreciate सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया, और another thing, I appreciate जिन्होंने सवाल पूछे, you know. So हम सब लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम, मुश्किल, challenges से आते हैं, you know, and these challenges defines us. These challenges looks very hard to overcome, but जब आप उसको overcome करते हैं, then you understand this defines you as a person. Okay, so आप अब वहाँ पे कहीं पे भी दुनिया में बैठे हैं, and then we all are trying to figure it out, our goals. However, as much as you wanted to get the education, it's very important. Congratulations, you all get it. But now there is a huge gap that you need to improve yourself, and what that gap is. Try to learn or try to invest in your personal development, in your emotional intelligence. Try to learn whenever you are applying to other companies, trying to find the gaps. This is where you are right now, and this is where you want to go, but what are the gaps? You know, एक old school thing है, what are your strengths and weaknesses? Instead of focusing on your strength, focus on your weaknesses and be true to yourself.
what is my weakness right now? Weakness is a very negative impression word, but this can actually help you find your gaps. When you identify these gaps, you can bridge these gaps towards your goal. And the last remark, you all are incredible. You are second to none. That means आप किसी से कम नहीं है. And never ever think like that. Go ahead and get your dreams. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर, आपने टाइम भी दिया हमें और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर किए। होपफुली ये सबके लिए जो है बेनिफिशियल होंगे। ये वीडियो जो है मेरी चैनल पे भी पड़ी रहेगी और जब तक यूट्यूब है, जब तक ये वीडियो रहेगी, लोग इससे फ़ायदा लेते रहेंगे और उनकी हेल्प होती रहेगी और सदका जारिया के तौर पर ये हमेशा के लिए अवेलेबल होगी। व्यूअर्स, अगले सेशन में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, टेक केयर।